नमस्कार आपण समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। आज रही वीडियो रे मु आपण मान सहित राइट एंड इजी ऑन फ्रीडम उपर किसी आम इजी लिखा जहाँ कौन फ्रीडम ऑफ बिलीफ कौन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कौन, फ्रीडम ऑफ डिसेंट जो इजी उपर कौन मुझे से नोट्सटा शेयर करी आ वीडियो आग को कहबी जे आपण मैंने यार पीडीएफटा किपर भाव पाइपर। तो चलतु स्टार्ट करवा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एंड बिलीफ इज ए स्कैर्ड आइकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन which provide in the part 3 of the constitution। जो freedom of speech expression belief सब कौन पार्ट 3 constitution आसुँच। this freedom is a central tenet of the constitution faith। it is recognized in article 19 that also list certain others fundamental freedom that Indian citizen enjoy माने जो इंडियन सिटीजन एंजॉय करछन्ती। नेक्स्ट देखिबा कोन ना it is one of the most basic element from a healthy open minded democracy। It allows people to freely participate in the political and social happiness of the country। Next देखिबा it is through free speech people would came together to achieve political influence to strengthen the majority and help others to become legitimate citizens, and that freedom of speech is considered as the first condition of liberty। freedom of speech is considered as the first condition of the liberty। it is the mother of all liberties। freedom of speech is the considered as the first condition, so freedom of the speech is the mother of all liberties। the term freedom of speech and expression includes any act of seeking, receiving and imparting information or ideas regardless of medium used। the right of speech is obviously indispensable for the preservation of a free society in which government is based upon the consent of an informed in the word right citizenry or and it is dedicated to the protection of the rights of all, even the most displaced minorities। नेक्स्ट देखिबा कोन ना एटा की कहले ना एटा को ए जो फ्रीडम रा कोन फ्रीडम रोडे को नेरा हम जो डिस्कशन करले फ्रीडम ऑफ स्पीच कोन ना फ्रीडम ऑफ स्पीच हम बोलले कहि परिबा। द टर्म फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन इंक्लूड्स एनी एक्ट ऑफ सीकिंग कहबा, रिसीविंग करबा, imparting करबा इंफॉर्मेशन और आइडियाज रिगार्डलेस ऑफ द मीडियम ऑफ यूज। द राइट ऑफ स्पीच इज obviously indispensable for the prevention of a free society in which government is based upon the concept of an informed in the word rights to citizenry and is dedicated to the protection of the rights of all, even the most disadvantaged minorities। next देखिए कौन based on John Milton arguments freedom of speech is understood as a multi-faceted right including not only the right to express or disseminate information and ideas but also including the right to seek, receive and impact information and ideas। next देखिए कौन पतंजलि शास्त्री जे rightly observed that freedom of speech रही and of the press laid at the foundation of the all democratic organization। प्रत्येक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन रो इशू कोन फाउंडेशन for without free political discussion no education no essential of for the proper function of the process of the popular government is possible। ए सब बिना कोन गोटे पॉपुलर गवर्नमेंट जो फंक्शन करे प्रोसेस करे फंक्शन रे पॉसिबल होई पार न था। नेक्स्ट देखिए कोन फ्रीडम ऑफ स्पीच offers every human being to express their feeling and thoughts known to others, but this not the only reasons proposed to protect the freedom of speech। The justification for why the freedom of speech to be protected: freedom of speech provides opportunity to express one's belief and show political attitudes। it ultimately results in the welfare of the society and state। freedom of belief and speech expression provides a mechanism to establish a reasonable balance between the stability and social change for active participation in the democracy। ये कौन गोटे मेकानिजम कार्य करछि कौन किपर हेबे ना स्टेबलाइज एंड सोशल चेंज फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी। thus it is a say हम कहि परिबा फ्रीडम ऑफ स्पीच strengthens the capacity of an individual participant in the decision making। फ्रीडम ऑफ स्पीच गोटे इंडिविजुअल जो डिसीजन मेकिंग कराउछि से कोन से पार्टिसिपेट अंशग्रहण करि पाउछि। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ डिसेंट। फ्रीडम ऑफ डिसेंट कोन
ना डिसेंट इज नॉट ए नेगेटिव बट इट इज ओनली ए रेशनल थिंकिंग डिसेंट गुड़ नेगेटिव ना किंतु रेशनल थिंकिंग थिंग of a group to urge to bring their ideas or tend to lead the nation to right the path. It has been observed with much justice that the history of progress of mankind is a history of the informed dissent. To the line, Kautilya dissent against the Nandas of Magandha complaints in the face of Alexander's invention he created the Maurya Empire जो एटा हिस्ट्री उदाहरण एग्जांपल हम कहि परिबा नेक्स्ट देखिए कौन द बुद्ध डिसेंट कौन द बुद्ध डिसेंट अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सिस ऑफ हिज टाइम्स एंड ए फ्लोर पाथ टू रिवेल्ड ए डिसेंकर डिसेंट अगेंस्ट द फेडिंग of Sanatana Dharma and restored it. Shivaji descended against the kingdoms of Dissent and the might of the Mughal Empire to lay the foundation of the Maurya Empire. All the famous people have descended to the line Gandhi have descended through his principle to bring the freedom to our hands from the British version in India, and mostly all freedom fighters from their slogans itself bring the taste of dissent. In other way, dissent is only something which brings the people to make open decision with a different state. हम dissent को अन्य अर्थ हम कहि पारे कोन ना dissent is only something माने जो द्रे कि which brings the people जहा कि लोक मान को किसी दोजी कोन टू मेक ओपन डिस्कशन गोटे ओपन डिस्कशन गोटे लोक मान को दोची आ उते डिफरेंट स्टेट विभिन्न प्रकार स्टेट डिफरेंट सब निजर कोन निजर निजर पीपल टू मेक ओपन डिस्कशन करबा से कोन डिसेंट ता को दोची प्रदान करची फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन is the very essence of the democracy at the essence of the democracy. These are two pillars in which our nation is built. Is this speech expression is two pillars जो कि हम nation को built होची माने दिया होची. Thus every citizen of the republic has the right and duty to judge her and here in less the indispensability of the right to dissent. तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आउ डिसेंट नोट्स जब आप पीडीएफ चाहती डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप अच्छी से जॉइन हाँ आपण मानक यार नोट्सटा मिल जाए. नेक्स्ट टाइम देखा कौन ना इक्वालिटी कौन देखा इक्वालिटी कौन आउ काइंड्स कौन कौन रही नेक्स्ट वीडियो में आपन डिस्कशन करी. तो यहीपर वीडियो चैनल जोड़ी जातु. थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो.